देश के संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 10वें दौर का मैत्री संवाद 17 से 20 फरवरी तक शिमला में चल रहा है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और मधुर बनाने को लेकर कई चरणों में मंथन हुआ। संवाद कार्यक्रम में दोनों देशों के वक्ताओं ने दोनों देशों में आर्थिक, पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने और समस्याओं को लेकर अपने विचार साझा किए। It's hugely important for both the countries, and the India Foundation has rightly chosen this venue, this very historic venue. The history of South Asia and the future pathway was rewritten or established way back in 1972. And for the 10th round, I think we have reached to a level at track 2 in peoples to peoples contact at a matured height, a composed approach where we can truly now leave it to the academics, the civil society member, retired bureaucrat to follow and build further on the achievements that we have made together. There will always be issues, impediments, but I think the understanding between the government and also the civil society is that we are working harder to overcome those issues and deliver those which are yet to be delivered. That greater understanding is there. Some of the discussions were really very frank, and sometimes the rhetoric that politicians from both sides use for their own personal or rather narrow gain is another impediment. I think that was discussed. I think this is, I have been attending since the 5th round from 2015. And I have seen much more maturity and composure and openness and belief in this platform. Well, when I attended the first one in 2015, things like visa issuance was a major impediment. And since then, India has set up one of the largest visa processing center, and Dhaka issues the highest number of visa among all the Indian consulate or visa centers that you have. We have very recently from our Kolkata mission appointed a private Indian company to process the visas, so the difficulty of the travelers and students and people who want to visit the relatives gets easier, and the number of Bangladeshi traveler has surpassed the highest number that used to be led by the American travelers way back in 2018. We have registered 2.2 million Bangladeshis who visited India in 2019, and that number is only going to grow. So I think this is a huge achievement. We talked about the bettering the facilities at the borders, also to smooth the trade and transportation of goods and services. The objective was to take the connectivity to pre-65 days, and we are almost there. Well, as we always said, and this is an area where we would be expecting India to do more, frankly speaking. We always say that this is not just threatening Bangladesh, it's going to destabilize the region. And the drug trafficking, the gun running, and the illegal movement of Rohingyas is going to impact the region. During the winter, when the seas come, we have seen them taking boats and risking their lives to travel to the far eastern countries, and we know there were a large number of Rohingyas, not just who came in 2017 into Bangladesh, but we have seen smaller movement compared to that. I mean, calling it small, even 100 or 1,000 is small compared to a million. But we have seen unrest continuing in the state of Rakhine and neighboring Chin and Shan state. So I think we need to
we need to have that understanding where we will truly recognize this as a regional threat and a regional security threat and act accordingly. I know it's complex, a lot of geopolitical issues are in place, but it's very important that India, one of our, if I may say so, among the best friends, we need India by our side fully. शिमला में पिछले 2 दिन से लगातार हमारे जो बांग्लादेश के मेहमान, हमारे मित्र यहाँ पर पधारे हैं, उनके साथ में हमारी बहुत लंबी बातचीत चली है। बांग्लादेश और हमारे देश का रिश्ता बहुत पुराना भी है और बहुत गहरा भी है। हम जानते हैं और चाहते भी है कि ये रिश्ता और अच्छा बने, ताकि हमारी मैत्री सभी लोग, दोनों देशों के नागरिकों के प्रति अच्छे दिन लाने के लिए एक योगदान दें। वे चाहते हैं कि इस साल बांग्लादेश की स्वतंत्रता को 50 साल पूरे हुए। बंगबंधु मुजीबुर रहमान जी के 100 साल उनके जन्म को भी आज हम उनका भी त्यौहार मना रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, वो बांग्लादेश की निर्मित के बाद फौरन बात हुआ था, उसको भी 50 साल पूरे हुए। और हम चाहते हैं इसलिए कि ऐसे बैकग्राउंड में, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे मौके पर हम ज़्यादा से ज़्यादा साथ में बैठकर बातचीत करते हुए अच्छी मात्रा में ये रिश्ता और दोहराए और इसमें हम बहुत अच्छी मात्रा में कामयाबी रहे। हमने ऐसे सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत भी की है। हर एक दूसरे को जब दिल से बातचीत होती है तो हम ज़रूर ऐसे सभी मुद्दों को किस तरह से उसके साथ डील करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम हमने सोचा है। तो हमें ज़रूर समझते हैं कि दोनों अलग देश है, तो स्वाभाविक है कि दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसे मुद्दे तो बनेंगे। एक परिवार में भी ऐसे मुद्दे बनते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह से मुद्दे तो ज़रूर सामने आएंगे ही, लेकिन उसके साथ किस तरह से निपटे उसके बारे में भी हम लोगों ने सोचा है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।